Our today's class is for 12th and you know the subject is geology. Today's topic is the description of fossil Trigonia. As you know, Trigonia is one of the class Lamellibranchias. We have already discussed the Brachiopoda shells, which are almost similar in features with the Lamellibranchias, or we can say mollusca group or mollusca phylum. Since shell of this Trigonia has phylum mollusca, class is Lamellibranchia and genus is Trigonia. The stratigraphical range, or we can say age, of this shell Trigonia is Middle Triassic to Upper Cretaceous. When we see the morphological features of this shell Trigonia, the shell is almost triangular in shape, and this triangular form also with the interior portion is shortened and rounded, while as the posterior is produced and angular. So both the valves, or we can say both the valves of this shell are of equal size, and the beak and this umbo is directly upwards or slightly backwards in the valves. The surface marking, you see, there are two types of surface marking. One is these are the radiating ribs, and these types of markings are the concentric ridges. So either radiating concentric striae or radiating ribs, or combination of both, a grid of these surface markings are present on the surface of both the valves. The escutcheon, as you have seen, the escutcheon which is along the hinge line of this shell Trigonia and behind the beak, or we can say umbo, behind the beak or umbo, is a characteristic feature or characteristic of the shell Trigonia. Internally, there are two strong teeth on the hinge line. On the hinge line, there are two strong teeth which are grooved, means the surface of the teeth are grooved. Two strong teeth with grooved surface are present on the hinge line of the right valve of this shell Trigonia. There are also deep adductor impressions. You know, the adductor impressions are the dual muscles which help the body of this animal to contract or expand. In other words, we can say that they help the shells to close the shell. This body impressions help the body of this shell, this animal, to close the shell or to open the shell. These are the two adductors. They help them for closing the shells or opening the shells. So also there is a parallel line. We have seen there are parallel lines which are connected with the adductor impressions, but only the one thing here is there is a simple parallel line, but that is simple. In some shells we have seen curved parallel lines. Those are known as parallel sinus, but here is a simple parallel line. There is not parallel sinus type of line. There is a simple parallel line in this type of Trigonia shell. Example is T cos theta. T cos theta is the one of the example of this fossil Trigonia. अगर हम बात करेंगे इस शेल को आसानी से समझने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से मैंने आपको बताया है, ये शेल जो है मोलस्का ग्रुप से ताल्लुक रखता है और क्लास लेमेलिब्रांचिया है इसका। जब जीनस की बात करेंगे तो ट्राइगोनिया जीनस है इसका। जब हम हिस्ट्री या एज की बात करेंगे, कहां से इस जो वजूद हुआ है इस शेल का और कहां तक रह चुका है, मिडिल ट्रायसिक से
अपर क्रिटेशियस ग्रुप्स या इपो एज जो है उन ग्रुप्स के दरमियान रह चुका है इस शेल की जो वजूद जो है। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की जब हम बात करेंगे, इसकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में हम कहते हैं कि ये जो शेल ट्राइगोनिया का शेल है ऑलमोस्ट तकरीबन ये ट्रायंगुलर तिकोनी की शक्ल इख्तियार करता है, तिकोनल फॉर्म में है, और इंटीरियर जो है वो शॉर्टनड और राउंडेड है, जबकि पोस्टीरियर साइड शेल का है वो प्रोड्यूस्ड खींचा गया लंबा और एंगुलर शक्ल में दिखाई दे रहा है। वॉल्व्स जो दोनों इस शेल के हैं तकरीबन साइज में बराबर है, और ऊपर की जो इसकी चोंच है जहां से गुजा, जिसको हम अम्बो कहते हैं, गुजा लेता है, वो डायरेक्टेड अपवर्ड्स है, किसी वक्त स्लाइटनेस बैकवर्ड की तरफ होती है। जब हम सरफेस मार्किंग की बात करेंगे, शेल पे जो सरफेस है खूबसूरत सरफेस दिखाई दे रही है, इस ये जो लाइंस है हॉरिजॉन्टल टाइप की जो कर्व्ड लाइंस आपको दिख रहे हैं ये कंसेंट्रिक रिजेस है, और जो खड़ा लाइन है आपको दिख रहे हैं शेल में ओरिएंटेशन में ये रेडिएटिंग रिब्स है। ये ऑर्नामेंटेशन है इस शेल की, बहुत खूबसूरती से चमक रहा है, ये शेल की जो सरफेस है चमक रही है इन रेडिएटिंग रिब्स, कंसेंट्रिक स्ट्राइड्स, या किसी वक्त कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी हो सकती है इनकी। और एक खास फीचर है एस्कर्ट चियान, एक खास फीचर है इस शेल में जो अलोंग द हिंज लाइन है, और ये जो बीक है इसके पीछे बिहाइंड द बीक है प्रेजेंट होता है ये एस्कर्ट चियान। ये इस ट्राइगोनिया का खास फीचर है। वह जब हम बात करेंगे इन लैमेली ब्रांचा क्लास के शेल्स की, उसमें से ट्राइगोनिया का खास फीचर एस्कर्ट चियान है, इसकी प्रेजेंस है, करेक्ट फीचर है ये। और जब दांत की बात, इंटरनली दो स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं जो ग्रूव होते हैं, जो जिनमें थोड़ी सी ग्रूवनेस होती है, उन ग्रूवनेस सरफेस पे दांतों की ग्रूवनेस, दो मजबूत दांत होते हैं, इंटरनली अंदरूनी दो दांत होते हैं, किस हिंज लाइन के राइट वालों पे वो मौजूद होते हैं। इसमें और एक खास चीज इस शेल में, इसमें डीप एडक्टर इंप्रेशंस, मैंने एडक्टर इंप्रेशंस की बात पहले की है। एडक्टर इंप्रेशंस ऐसे इंप्रेशंस है, ऐसे पार्ट्स है जो शेल को क्लोज करने में या ओपन करने में मदद करते हैं। यहाँ पे भी ऐसे डीप एडक्टर इंप्रेशंस इस शेल में है, जो इंटीरियर जिसमें है वो छोटे हैं पोस्टीरियर के बरअक्स। और एक खास चीज है जिसमें मैंने बताया, पेलियल लाइन जो है सिंपल है, वो कर्व्ड नहीं है, अगर वो कर्व्ड होती तो हम उसको पेलियल सिनस कहते, लेकिन ये एक स्ट्रेट पेलियल लाइन है, दैट इज व्हाई हम इसको कहते हैं, इसकी ये सिंपल पेलियल लाइन है। इस शेल जो ट्राइगोनिया है, इसकी एग्जांपल एक है जिसको हम ट्राइगोनिया कॉस्टेटा कहते हैं। उस कॉस्टेटा की एक एग्जांपल की वजह से हम ये बता सकते हैं कि हम कैसे इस शेल को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो आई थिंक these features almost are all the features which are regarding this shell, and we show the different description, or we can say we just show the description of this fossil Trigonia. So this was all about fossil Trigonia.